Well, let's begin the debate with some good news. The lockdown is working, our efforts are paying off. The decision of enforcing the lockdown pan-India has turned out to be a masterstroke. Yes, the number of positive cases are rising, which stands at 14,792, and there have been unfortunate deaths as well. 488 people have died due to coronavirus. But the good news is that the recovery rate is improving. In just the last 24 hours, there has been a gain of 1% in the recovery rate, which now stands at 13.6%, and there are 14 districts where no new case has been reported in the last 14 days. So clearly our resolve is working. Looks like we have been able to in some ways control the situation, and if we continue to cooperate with the government and continue to comply with the lockdown norms, then soon we'll see a major reduction in the rate at which the positive cases are growing. We'll see a flattening of the curve as well. Well, let's in fact go across to our experts to see how important this particular update is. We are joined by Dr. Romil Tikku, Associate Director of Max Healthcare, and we also have Dr. KK Agarwal, President of Heartcare Foundation, on the broadcast with us. Good evening to both of you. Let me first go across to Dr. Agarwal. Dr. Agarwal, this information which was shared by the Health Ministry comes as a bit of relief at this point in time. The fact that the recovery rate has seen some sort of an improvement, and the fact that there are 14 districts now where no new cases have been reported in the last 14 days. I beg your pardon, 47 districts where no new case in the last 14 days. Definitely the effect of lockdown is coming. Our mortality is 0.4 per million, which is one of the lowest. Our recovery rate is 80:20, and which is as per international norms. Our doubling time is 7 to 8 days, which was 4 days earlier. So there is an improvement. Our growth rate is 1.2, which we expect it to come down to less than 1. The time it comes to less than 1, then only we know that we are regressing in our approach. At this moment, 1.2 of a growth rate means number of cases today vis-a-vis number of cases yesterday. That needs to reduce. And the doubling time in Kerala has gone up to 17 days. Doubling time of Delhi, Maharashtra, India is the same. Doubling time in Madhya Pradesh is 4. So therefore, we need to focus on few states, few hotspot areas. Otherwise, the condition is good. And I think from day after tomorrow onwards till 3rd of May, the national lockdown will go away over a period of time, but personal lockdown will remain. Means I must continue my personal lockdown, my personal distancing, my mask, my take care of. So I have to see to it that my doubling time in my family, in my colony, in my office is absolutely no case, and my growth rate is less than 1. That is going to be, every citizen now has to work for himself. That is called as personal lockdown must continue, and Modi ji's lockdown will go away. All right, Dr. Agarwal, let me also go across to Dr. Tikku. Dr. Tikku, 2014 people have been cured so far, and there is hope. There is hope that if we continue to comply with the lockdown norms, if we cooperate with the authorities and stay home, then this is all going to work out in the end. We'll sooner see a further reduction in the growth at which, these cases are increasing. Definitely. If you look at the graph, the numbers are definitely going down. Post the lockdown 2 weeks, there was a spike, and then there was a sudden decline in the numbers. And now if you see, we've had about, in the last 1 week, we've done pretty well. The numbers have gone down. And last 1 week, if you look at all the states, and if you look at the doubling numbers, they've definitely improved. And right now we have 15,000 odd cases. We have 400 about mortalities, and 2,000 people have recovered. If you look at the doubling rate, it has gone down from 3 to 6 days. And also the recovery rate, the mortality rate is less, the outcome ratio is 80-20, the growth factor has declined. So even looking at the last 5 days at the overall India numbers, it's been pretty stable. There's no exponential growth happening. The numbers are 800 to 1200, and the mortality is about 25 to 35. Yesterday, 900 odd cases and 38 mortalities.
But if you look at the states individually, the Kerala has done exceptionally well. The doubling rate has gone down from 3 to 50 days, and in Punjab, 3 to 30 days. If you look at Telangana, 18 days, Delhi, Orissa, Tamil Nadu, 23 days, Maharashtra, which had such a large number of cases, they have increased the testing. In last few days, the numbers have gone down. Look at Mumbai. 200 odd cases in the last few days has gone down to 70 now. West Bengal and Bihar, they have to ramp up the testing. They're not doing enough testing. And the two states where we need to be a little aggressive, Madhya Pradesh and Gujarat, because there's been a little bit of a spike there. Madhya Pradesh, day before there were 361 cases, yesterday 61. But looking at the figures overall, 19 states are having a doubling rate of less than the national rate. So that is definitely a good sign. And this is what the lockdown is supposed to do. It buys you time to ramp up your facilities, and we've done a marvelous job. We've had ramped up our facilities. We're doing more and more testing. And let me stress on testing now. Absolutely. Testing is the way to that go. is a key point. That is a key point that I want to take a comment from Dr. Agarwal also on that. Dr. Agarwal, yes, the fact that these numbers are encouraging doesn't mean that we, compromise anywhere when it comes to testing. Testing has to be continuously increased, even if the lockdown is over, because, even if the lockdown is over, the pandemic isn't. That is the kind of situation we are living in at this point in time, because we really don't know where the virus is. See, remember that once we go from stage 2 directly to stage 4, which is where our aim is going to be, and when we shift and we bypass stage 3, and when we go into a surveillance mode, then we will need that antibody test. At this moment, antibody test has no value because we are because antibody test is only positive after 7 days. So if you want to have diagnosis and treatment, we need RT-PCR. But when we need how many people have recovered, how many doctors have got asymptomatic infection, what is the prevalence of the disease in the society, then we need to intensify IgM, IgG body. The kits have come. I think they are going to start it either from today or from Monday, and that will help us in locating hotspot, in finding cases in hotspots. So all those things will help. So addition of tests rightly at the right time, they have arrived in India. Fortunately, they are not the way it happened in UK, that they got millions of tests and found out that those tests were not effective at all. So therefore, once we have the right kit at the right time, we should be able to manage the situation. Secondly, those in suspected cases where you are sure clinically, their RT-PCR is the only answer. Their antigen antibody test will not take place. What happened in Delhi yesterday, so many people of one family got infected. Right. These are the situations which worry us. Yes, go ahead. Absolutely. Dr. Agarwal and Dr. Piku, thank you very much for joining us on the debate. Let's hope that we see a further reduction as far as the growth at which the positive cases are increasing is concerned, and we see improvement in recovery rate as well in the coming days. Thank you very much for joining us. Well, moving on, a free-for-all star fight has begun on social media. This fight is about freedom of speech. But how did it all begin? Wrestler Babita Phogat posted a tweet deriding a particular community, blaming a particular community for the coronavirus spread, and then she was slammed by other celebrities like Swara Bhaskar and Jwala Gatta. But Kangana Ranaut came in defense of Babita Phogat. Kangana Ranaut, remember, her sister's Twitter account also has been suspended. So Kangana Ranaut says this is about freedom of speech, and Babita has all the rights to say what she feels about the situation. पिछले कुछ दिन से मैंने एक ट्वीट किया था, और उसके बाद से कुछ लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप के ऊपर और ट्विटर के ऊपर गलत मैसेज भेज रहे हैं, और कुछ लोग फ़ोन करके धमकियां भी दे रहे हैं। तो वो लोग कान खोल कर सुन लें कि मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूँ कि आपकी धमकियों से डर के और मैं घर बैठ जाऊँगी। असली बबीता फोगाट हूँ, अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और आगे भी लड़ती रहूँगी। मैंने किसी धर्म, समुदाय या जाति के बारे में नहीं लिखा है, मैंने उन लोगों के बारे में लिखा है जिन लोगों ने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। Well, let's also now listen into what Kangana Ranaut is saying in defense of Babita Phogat. She's pointing out, or rather highlighting, Twitter's hypocrisy on this issue.
मैंने आज बबीता फोगट जी का देखा एक वीडियो जिसमें जिस तरह से उनको हैरेस किया जा रहा है। मैं अगेन केंद्र सरकार से अपील करती हूँ कि जो भी इंसान राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाता है उसको इसी तरह से शोषित किया जाता है, उसको उसकी नौकरी छीन ली जाती है, कईयों का खून किया जाता है। आज अगर बबीता जी को कुछ भी होता है, कभी भी कोई दूसरी राष्ट्रवादी आवाज नहीं उठेगी, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। Well, let's go across to our guests. Let's open up the debate. We're joined by Saira Shah Halim, theatre personality and activist. We also have Shehzad Poonawala with us on the broadcast. He's also a political analyst. Good evening to both of you. Let's also introduce Sumansi Raman, political analyst, joining us on the broadcast. Good evening to all of you. Let me first go across to Saira Shah Halim. Saira Shah Halim, Babita Fogart says, she's not going to take back that comment and she means what she tweeted. Now, the entire industry, including sports personality, is completely divided as far as that comment is concerned. Some say this is freedom of speech, others say she is, maligning one particular community. See, all I will say is that freedom of speech is great in a liberal democracy like ours. However, people need to differentiate what is freedom of speech and what is hate speech. Even Article 19 of our Constitution says that you are at the liberty of espousing your views. However, it is subject to scrutiny, because anything that divides, anything that promotes animosity between communities is not freedom of speech. It is hate speech. This is called for action against certain communities. And why would someone, make such divisive, derogate speeches? Right. Now that's one part of the argument. Babita Fogart also goes on to say, Saira Shah Halim, that I haven't said anything about religion or caste or creed. I've just spoken about those individuals who have contributed to this, exponential growth of the virus, who've turned out to be super spreaders. And is that not a fact? No, see, firstly, WHO has very clearly said that we cannot criminalize a pandemic. We cannot, use the word like Muslims are the. If you look at Twitter, there is a certain, cell operating that is really political, and they are actually, putting the entire Muslim community under an umbrella, and that is. Okay. That should not happen. Okay. Yes, Saira, stay on with us. In fact, we have Babita Fogart with us on the broadcast. She joins us now. Let's go across to her. Arjuna Awardee wrestler Babita Fogart is with us. Babita जी, सायरा शाह हलीम भी अभी कह रही हैं, उससे पहले भी ट्विटर पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी। अब आपके ट्वीट पर एक लड़ाई छिड़ गई है। लोग कह रहे हैं कि आप कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आप समाज को क्यों बांट रही हैं एक कम्युनिटी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल के। आप क्या कहेंगी? मतलब कोई धर्म है क्या? जमाती शब्द जो है वो कोई धर्म है? क्योंकि सोचने की बात है कि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन लोगों ने ऐसा किया है। अगर आप गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो फिर आप भी उतने ही हिस्सेदार हुए, क्योंकि जो गलत है उसको गलत बोलिए और जो सही है वो सही है। मैंने जो गलत है उसको गलत बोला है कि ये चीज जो लोग ऐसे कर रहे हैं, जाहिल हरकतें जो नर्सों पे डॉक्टरों पे थूक रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन को सहयोग नहीं कर रहे, जो लोग जानबूझकर कोरोना संक्रमण को फैला रहे हैं, तो ये सोचने की बात है। हमने धर्म पे कब बांटा? मैंने कब कहा है कि मैंने किसी धर्म समुदाय के बारे में, किसी जाति के बारे में मैंने कब कहा? मैं पूछना चाहती हूँ मैंने कहाँ पे लिखा है? नहीं, क्योंकि जो तबलीगी जमात के लोग हैं, हम सब जानते हैं कि उनका किस धर्म से ताल्लुक है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन को, जो डॉक्टर्स पर अटैक कर रहे हैं। इसमें आपने कहीं भी रिलीजन नहीं लाया, ये आप कह रही हैं अपनी सफाई में। बिल्कुल, और मैंने अपनी ट्वीट के अंदर भी यही लिखा है कि मैंने कहीं वो किसी धर्म या जाति के भी ऊपर लिखा ही नहीं है। अब लोग अपने ऊपर ले रहे थे, वो मेरी गलती थोड़ी है, वो तो उन लोगों की गलती है। जी बबीता, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि और भी कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। सुमंसी रमन हमारे साथ है। सुमंसी रमन, आई होप यू हर्ड इट एंड इनफैक्ट सुमंसी रमन, बबीता फोगाट कह रही हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना नहीं बना रही है। पीपल हु आर kind of trying to create a controversy about it are the ones who are communalizing it. Okay, first of all,
I think this entire approach of communalizing a pandemic, I think this must be the first case. We should go back in history to see whether any other country has done it. A person who has been an eminent sports person, who was the recipient of the Arjuna Award, it is sad that they have to spew hate like this. Look, assuming that the people who are involved in this have not done it knowingly, as far as being infected is concerned. Some of them have died. So I think this is a ridiculous argument to say that they are somehow the object of hate for other people. Look, they made a mistake. बबीता फोगाट जी, आप अपनी ट्वीट के जरिए नफरत फैला रही हैं। आप समुदाय विशेष पर क्यों पूरी की पूरी जिम्मेदारी डाल रही हैं, लोग आपसे पूछ रहे हैं। आप ये भी कह सकती थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं और इस बात की उन्हें जानकारी है, फिर भी सुपर स्प्रेडर्स के तौर पर वो कहीं ना कहीं सामने आए। आप जमाती और जाहिल इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि हम तो डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं ना, उनके ऊपर थूक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, उन लोगों को जाहिल नहीं कहेंगे तो हम क्या कहें? आप बताइए, हमें क्या कहेंगे? नहीं, बट जो लोग लेकिन जमाती कह करके और तबलीगी जमात का किस चीज, जी बबीता, तबलीगी जमात का किस धर्म से कनेक्शन है, ये तो हर कोई जानता है इस बात को। देखिए, वो मैं किस धर्म से कनेक्शन, लेकिन मैंने किसी धर्म समुदाय का नहीं लिखा। तबलीगी जमात जिन लोगों ने ये फैलाया है, निजामुद्दीन मरकज से जो लोग वहां से भागकर घरों में छुप रहे हैं, अपना इलाज नहीं करवा रहे, और फिर जब डॉक्टर और नर्स जब इलाज करने जाते हैं उनके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, आप उनकी साइड ले रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने बोलना उनके खिलाफ चाहिए, कम से कम ये तो कहिए कि वो गलती कर रहे हैं। Let me take a response from Saira Shah Aleem on that. Saira Shah Aleem, respond to Babita Fogat. It's trying to use objectionable words, comparing a community with an animal. I don't want to use that word. But when you even using it as a simile, it is abhorrible. And I think being a public person, Babita ji, हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह के घटिया कमेंट्स आर नॉट अप्रिशिएटेड, स्पेशली इफ यू आर अ पब्लिक पर्सन। नहीं, ये बताइए आप, मैंने कि घटिया कमेंट किया है? आप घटिया काम जो कर रहे हैं उनको घटिया भी नहीं बोल सकते क्या? क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं है कि हम गलत को गलत बोल सकते? ट्विटर पे वो आप दर्शकों को बताइए, आप ये मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया? आप ये मानते हैं क्या उन्होंने अच्छा काम किया? आपने किस जानवर का मेंशन किया है, आप बता दीजिए, क्योंकि मेरे इतने घिनौने शब्द दिखेंगे नहीं जुबान पे। वो आपने भी पढ़ा है और देखा भी है। मैंने जो लिखा है, मैंने किसी धर्म, समुदाय, जाति के बारे में नहीं लिखा, लेकिन लोग अपने ऊपर ले रहे, वो मेरी गलती नहीं है। नहीं, लेकिन तबलीगी जमात के लोगों का तो, तबलीगी जमात का हिंदुओं से कोई कनेक्शन नहीं है, तबलीगी जमात का ईसाइयों से कोई कनेक्शन नहीं है। क्रिटिसाइज हर कोई उन लोगों को कर रहा है जो कि लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि जानते हुए कि उन्हें बीमारी है, कोरोना वायरस है, उसके बावजूद इलाज कराने को तैयार नहीं, डॉक्टर्स पर हमला कर रहा है, पुलिस पर हमला कर रहा है। इन सभी की क्रिटिसिज्म हर कोई कर रहा है, लेकिन नेम कॉलिंग बबीता जी, नेम कॉलिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, गलत है नेम कॉलिंग। मैंने किसी धर्म या जाति का नाम लिया ही नहीं है। नहीं, ये तो है ना कि कुछ करा भी नहीं और करा भी और करा भी। देखिए, एक जिम्मेदारी मैं क्या बोल रही हूँ, रिस्पॉन्सिबल लोग। Okay, let me also bring in Shehzad Poonawalla now. All right, let me bring in Shehzad Poonawalla. Shehzad, Babita says I haven't highlighted that this is one particular community which is responsible. लेकिन फिर तबलीगी जमात का हिंदुओं से और ईसाइयों से कनेक्शन तो है नहीं, हर कोई जानता है तबलीगी जमात किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। Why indulge in name calling? क्यों एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना? That's the question many are asking and have a problem with. Swati, since you've come after 20 minutes to me, can you give me 1 minute without anybody interrupting, because there are 2 hecklers on your debate. Anyways, मैं खुद एक भारतीय मुसलमान हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वाति जी कि पाकिस्तान ने
तबलीग जमात का नाम लेकर कहा है कि ये तबलीग जमात ने तकलीफ कर दी है, हमारे नाक में दम कर दिया है। क्या पाकिस्तान भी इस्लामोफोबिक है? हमारी बहन बबीता फोगट के खिलाफ जो ये एक आंख वाले उदारवादी और सेक्युलरवादी ढोंगी लोग यहां पर जो हमला बोल रहे हैं, बबीता को रेप के थ्रेट्स मिले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जमात के इन्फेक्शन होने पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, पर उसके बाद उनकी जो हरकतें हैं, नंगा नाच रहे गाजियाबाद में डॉक्टरों के सामने, थूक रहे हैं, मुरादाबाद में वो मुजरिम जाकर एससी अग्रवाल को पीट रहे हैं, ये हरकतों को धर्म का चोला डालकर उनके अधर्म को बचाने का काम कौन कर रहा है? हां, और ये वो लोग हैं जो हिंदू टेरर बोलने से नहीं कतराते थे। हिंदू टेरर बोलने से जो लोग कतराते नहीं थे, आज अगर मेरी बहन बबीता जमातियों को, क्या पूरे देश के मुसलमान जमाती है? क्या सायरा शाह हलीम जमाती है? क्या मैं जमाती हूं? नहीं, हम जमाती नहीं है, हम मुसलमान हैं। बबीता ने अगर जमातियों के जहालत पे बोला है तो मैं बबीता के साथ बतौर भारतीय मुसलमान खड़ा हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, धर्म बाद में है, और धर्म का कोई लेना देना नहीं। धर्म के चोले को बचा। Sumansi Raman, Tablighi Jamatis do not represent the entire Muslim community. That's the argument coming in. Then why communalize it by saying that she's trying to, malign the image of Muslims? No, I am. Look, my simple question. Today at the press conference, the Joint Secretary Health said, I think referred to about 4,900 out of the 14,000. Now it has crossed 15,000 odd cases in the country being linked to this particular meeting. Now, he also very, kindly seemed to give a breakup state-wise of what is the proportion. Now, this is a government servant. Should he be behaving like this? Should he be? And that is what is fueling these kind of comments from the likes of Babita Phogat and others. What is the, what is to be gained? No, you tell me. Now, have they given the breakup of the other clusters? There have been clusters in Mumbai. Okay, that's a valid point. Let me bring in Babita now. Babita, लोग ये कह रहे हैं कि फिर सिर्फ तबलीगी जमातियों का ये किस्सा क्यों हाईलाइट आप कर रही हैं? आप क्यों नहीं बात करती हैं उन लोगों की जो लोग पदयात्राओं में शामिल हो रहे हैं, जो लोग मंदिरों में जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, उन लोगों को आप एक्सपोज क्यों नहीं कर रही हैं? मैंने सिर्फ तबलीगी जमात में जो भी लोग ये संक्रमण फैला रहे हैं, हर कोई जाहिल है, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना। नहीं, मैं तबलीगी जमात की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं उन बाकी तमाम ऐसे इंसिडेंट्स की जो कि देश भर से रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनका तबलीगी जमात से कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे? ये भी पूछा जा रहा है आपसे। वो लोग डॉक्टर नर्सों पे पत्थर तो नहीं बरसा रहे, उनके ऊपर जाकर थूक तो नहीं रहे, वो लोग फलों के थूक लगा के तो नहीं बेच रहे। नहीं, पुलिस वालों पर और हॉस्पिटल स्टाफ पर अटैक की जो खबरें वो पूरे देश भर से आई हैं, वो उसमें सिर्फ तबलीगी जमात के लोग शामिल नहीं है, देश भर से ऐसी खबरें आई हैं। बबीता, पुलिस वालों पर देश भर में अटैक हुआ है, क्या आप कह रही हैं कि okay, I believe we've lost that connection. I believe we've lost that connection with Babita Phogat. We'll try and fix that. We'll patch her again. Let me meanwhile go across to Shehzad Poonawala. Shehzad Poonawala, the argument is that why not expose all of those people? Why not name and shame all of those people who have contributed in this increasing number of positive cases that we are witnessing? Everybody has condemned is Kanika Kapoor a member of the Jamaat? The first entire onslaught on these people started with the Kanika Kapoor case. Kalburgi we condemned, Kumaraswamy and Yediyurappa we condemned. Everybody who's becoming a COVIDiot is being condemned. But Shaheen Bagh COVIDiots and Jamaati COVIDiots are protected by the likes of the Saira Shah Halim and Dr. Sumansi Raman, Congress Party and others, when they say, don't do anything to them, ये Islamophobia है. Pakistan, Indonesia, Malaysia, Singapore, all of them are attacking these Jamaatis for spreading it. Are they Islamophobic? Dr. Sumansi Raman, because of his one-eyed secularism, protects the Jamaat and says nothing when we attack Kanika Kapoor. Why? Sorry, not at all. Not at all. Don't have these double standards, sir. 11,000 cases outside. And Babita is getting rape threats.
Babita is getting rape threats. Even if she said Jamatis are jahalat, why should she get a rape threat? She is a national pride of India. बबीता फोगाट क्रिटिसिज्म ये भी हो रहा है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कुछ भी नहीं कह सकते, आप किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं और आप क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा किया है उनके बेसिस पर आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि जमाती का मतलब सारे मुसलमान है क्या? मुझे तो नहीं लगता। जमाती का मतलब सारे मुसलमान होता है क्या? एग्जैक्टली नहीं होता। मैं खुद मुसलमान हूँ, जमाती नहीं हूँ। जी मैं मुसलमान हूँ, मैं जमाती नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। पहले तो जमातियों का मतलब मुसलमान नहीं होता है, लेकिन आप फिर उन लोगों की बात भी कीजिए, जो पदयात्राओं में शामिल हो रहे हैं, जो बाकी मंदिर के प्रोसेशंस में शामिल हो रहे हैं, जो वहां भीड़ लगाए हुए हैं उनमें इकट्ठा हो रहे हैं, वो भी तो सुपर स्प्रेडर्स बन सकते हैं, वो भी तो इन्फेक्ट होकर दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा, पुलिस प्रशासन को सहयोग नहीं कर रहा, सरकार को सहयोग नहीं कर रहा, वो हर कोई जाहिल है, चाहे कोई भी हो उसमें। All right, Sumansi Raman, she has answered the criticism. She says she is not maligning a particular community. She says everybody who's defying the lockdown and attacking our COVID warriors has to be punished. Yes, there have been cases across the country where doctors have been attacked for the last several years now. In fact, every few months you get a case where a nursing home is smashed or a doctor is seriously injured. It happened. But we're talking about, we are right now talking about, okay, but we're talking about the pandemic situation. We're talking about the pandemic situation. So if somebody says that Jamatis, Tablighi Jamati individuals who attended the religious congregation have turned out to be super spreaders, or by hiding their identities and traveling to other states and not revealing the information have infected other people, how does that become communal? No, it does become communal for the simple reason you're not calling out others who may have been guilty of the same. You are calling out, why is the government you are officially giving out these statistics day calling out day everybody. after day? Answer that question. Okay, all right. But Sumansi Raman, and let me bring in Shehzad Poonawalla as well. But Sumansi Raman, this question is for Shehzad Poonawalla. There's a deliberate attempt to hide the fact that you attended the markaz. There's a deliberate attempt to hide from the authorities that you came in contact with those individuals. That's why it is important to highlight that. My question is, anybody who attended and you'll have to ask Sumansi Raman to hear the other side. He's constantly talking, not allowing one second. his voice to Let's come. take a comment from Shehzad Poonawalla. Mr. Raman, I'll come back to you. Swati, nobody is vilifying the Jamatis for getting infected. We are raising questions on their post-infection conduct. बबीता ने सवाल जमाती के हरकतों पे उठाया है, उनको संक्रमण हुआ उस पे नहीं। बबीता को बलात्कार के थ्रेट मिले हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की छाती पीटने वाले उस पे भी तो कुछ बोले। मेरी बहन बबीता को अपनी, चलो उसकी राय गलत भी हो, उसको बलात्कार का थ्रेट क्यों दिया जा रहा है और उस पे सुमंसी रमन चुप है। सुमंसी रमन को सिर्फ आकर अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स करना है, उससे मुझे आपत्ति है। ये वोट बैंक का जी, बबीता कुछ कहना चाह रही है। क्विक कमेंट फ्रॉम बबीता, देन आई टेक अ रिस्पांस फ्रॉम सायरा शालीम, शी जस्ट जॉइंड अस बैक। बबीता जी बोलिए। देखिए, मैं यही कहूंगी कि मुझे हर रोज फोन आ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ट्विटर के ऊपर, मैसेज फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर फोन कॉल्स आ रहे हैं और मुझे इतना गलत मैं बता भी नहीं सकती, इतना गलत बोल रहे हैं वो लोग। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि वो लोग तो मुझे सीधा डायरेक्ट, वो भी गलत है, वो बात भी गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है आपको इस तरह की धमकियां देने का। सायरा शालीम, Babita Phogat is saying that she is criticizing every such individual who is not obeying the lockdown norms, and everyone who has attacked the doctors or the policemen, all of them need to be punished. She's calling out all of them. See, I'll tell you what. Now, being a public person, being a public personality, there's a way of addressing things. So, Babita ji could have said it that anyone who is, being careless, being callous, and whoever is
some kind of a harbinger, who's trying to increase the rate of the spread is culpable. Simple as that. And it is very clear, all intelligent people will understand that who are the people who are being careless. Now you are talking, supposing I put in a communal comment which is targeting a specific community. Imagine how bad I would look in this public spectrum. So all right, but then her argument is that you are looking at it that way. She's just calling out those individuals who are defying the lockdown norms and are attacking doctors. The other side feels that this is targeting a particular community. All right, Babita Phogat and Saira Shah Aleem, thank you very much for joining us for this debate. Shehzad Poonawalla and Sumansi Raman will continue to be with us for the next debate as well.